एवढू स्टार्ट हवा declaring PLSQL variables. Objectives after completing this session, we should be able to the following: recognize valid and invalid identifiers. Identifiers mean variables. List the use of variables. Declare and initialize variables. List and describe various data types. Identify the benefits of using the percentile type attribute. Declare use and print bind variable. Introducing variables. Variable can be used for temporary storage of data, manipulation of store value and reusability. Right? Variables जोटा हमें declare करूचे, variables जोटा कि हमें create करूचे, सेरा गोटे temporary memory allocation, जो थे कि मु value को temporary भाବରେ गोटे जगह रे store करिक रखी, right? तो ता पाई मते कोडिंग दवा पड़िबो select first name department id into एटा होची मोर variable name. आप पूर्व एटा यूज करिया पूर्व मते variable declare प्रथमे कर दबार अछि declare variable create variable statement जोटा कि हमें previous class रे हमें जेटा जानले. Use of variables with PLSQL, you can declare variables and then use them in SQL and procedural statement. Variables are mainly used for storage of data and manipulation of store values. Consider the PLSQL statement in the slide. The statement retrieves first name and department ID from the table. If you have to manipulate first name or department ID, you have to store the retrieved value. Variable are used to temporarily store the value. You can use the value stored in the variables for processing and manipulating data. Variable can store any PLSQL objects such as variables, types, scores, and subprograms. Reusability is another advantage of declaring variable. After the variable are declared, you can use them repeatedly in an application by referring to them manipulate time in various statements, right? मु variable declare कोची एथि पई जे मोर जो कॉलम भितर जो वैल्यूटा मोर रिट्रीव होबो सेटा टेम्पररी भाबरे कोनोसी गोटे लोकेशन रे ताकू स्टोर करिके ता ऊपर काम करिया पई मते वेरिएबल दरकार जोटा कि मोर मु आ कॉलम को डायरेक्ट इंडिकेट न करी मु डायरेक्टली वेरिएबल को इंडिकेट करी बुझला. Requirement of for variable names. A variable name must start with letters, right? Variable name जो declare करिवो सेटा तम लेटर रु स्टार्ट हवा दरकार, नंबर रु लेटर रु स्टार्ट हवा दरकार. कैन इंक्लूड लेटर्स और नंबर. लेटर रु स्टार्ट हवा दरकार तापर तम नंबर दे परिवो. जेमते मोर सपोज var1 तो var1 ता मोर वेरिएबल नेम जदी अछि तो मोर लेटर रु स्टार्ट होछि तापर तमे नंबर दे परिवो. एटा केबे कर परिवो 1 var बोली कर परिवो, नंबर रु केबे स्टार्ट हबो बुझला. Can include special characters such as dollar, underscore and hash symbol, right? हमें इस symbol उड़ा भी use कर परिवो. Must contain no more than 30 characters, right? जेमते हम पासवर्ड रहउची पासवर्ड तमे धर 16 कैरेक्टर रु अधिका दबा दरकार 8 कैरेक्टर्स रु अधिका दबा दरकार सेमिति तमरो वेरिएबल डिक्लेरेशन तम 30 कैरेक्टर्स भितरे तुमको दबार 30 कैरेक्टर्स रु ऊपर को तमे दे परिबो. PLSQL must not includes reserved word. Reserved word माने कोन कीवर्ड दे परिबो वेरिएबल ना कीवर्ड आकार दे परिबो हला. जेम धर मु डिक्लेयर करिवि इंटीजर मोर गोटे कीवर्ड, राइट? या फिर varchar गोटे कीवर्ड सेटा को वेरिएबल हिसाब से ट्रीट कर परिबो. मु गोटे यूजर डिफाइंड ना गोटे क्रिएट करिवि जोटा कि यूजर निजे क्रिएट करूछ बुझला. Handling variable in PLSQL, variable are declared and optionally initialized in the declarative section, used and assigned new values in the executable section, passed as parameters to PLSQL subprograms, used to hold the output of a PLSQL subprograms. देखो तारा डिटेल देखो. Declare and initialize them in the declaration section. You can declare variable in the declarative part of any PLSQL block, subprogram or packages.
Declaration allocate storage space for a value, specify its data type and name the storage location so that you can reference it. This declaration can also assign an initial value and impose the not null constraint on the variable. Forward reference are not allowed. You must declare a variable before referencing it in the statements. Include the variable, the other declarative statement. Variable ଯେତେବେଳେ यूज करियो ता पूर्व तुमको डिक्लेयर कर देवार अछि डिक्लेयर जदि कोनोसी माने क्रिएट कर देवार अछि वेरिएबल जदि तमे वेरिएबल टा क्रिएट करि पानो ताले तमे स्टेटमेंट ताको यूज कर परिबो नाही कारण स्टेटमेंट जेतेले तमे यूज करियो सेटे इनटू कीवर्ड दिया होछि इनटू कीवर्ड माने ऑलरेडी मोर क्रिएट हेकि अछि ताले मु ताको यूज करूछि बुझला तो वेरिएबल यूज करिया पूर्वरु तुमको प्रथमे वेरिएबल टाको डिक्लेयर करिवार अछि देन ताको तमे एसक्यूएल और पीएलएसक्यूएल स्टेटमेंट ताको तमे यूज कर परिबो बुझला use them and assign new values to them in the executable section. In the executable section, the existing value of the variable can be replaced with a new value, right? धर तमे गोटे वैल्यू गोटे स्टेटमेंट रे तमे वेरिएबल यूज करछ धर डिक्लेयर स्टेटमेंट रे तमे डिक्लेयर करछ गोटे var1 कई गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करछ ताकू तमे एसक्यूएल स्टेटमेंट रे ताकू यूज करछ एसक्यूएल स्टेटमेंट जते यूज करछ जेमते आरो काली हमें जो क्लास करथले जहार एम्प्लॉय आईडी 100 थिबो तार फास्ट नेम ता वेरिएबल भीतर स्टोर हो राइट एटा जते एक्सिक्यूट कलो स्टोर हे गेला से सेकंड टाइम जते एक्सिक्यूट करिवो नुवा वैल्यू गोटे आसीबो बुझला सेकंड टाइम जते एक्सिक्यूट करिवो नुवा वैल्यू आसीबो से नुवा वैल्यूटा जते वेरिएबल भीतर स्टोर होबो से कोन हबो ओवरलोड हिजो ओवरलोड माने जो पुराना वैल्यू अछि ता ऊपर तम नुवा वैल्यू पळे आसीबो वेरिएबल भीतर तो एबे नुवा वैल्यूटा स्टोर हेकि रहला वेरिएबल भीतर बुझला जल्दी तमर देखिबो ग्रोसरी दुकान हला ग्रोसरी दुकान रे कि तम मॉल फॉल रे देखिबो तमर जो धर मसला जो खुला बिकंती जो मसला जो खुला 100 ग्राम 200 ग्राम जो खुला बिकंती देखिबो ताका जो ओल्ड स्टॉक थिबो से माने कोन करे ताको बाहर कर दे नुआ जो स्टॉक अछि ताको आगे पुरेबे ओल्ड स्टॉक को ता पर पुरे हला माने तुमको लागिबो जे कोन मु नुआ जिंस नउची बट सेही पुराना जिंस ही से माने रोटेट कर दितो सेम जिंस वेरिएबल भीतर तमरो पुराना डाटा अछि तो नुआ डाटा आसीबो कोन करबो नुआ डाटा ता ऊपर रहि जो आ ताकू तो बाहर करिकि फोन थरे नुआ डाटा को पुरै परिबोनी तो नुआ डाटा कोन करबो से पुराना डाटा ऊपर रहि जो तो एबे तुमको लागिबो कोन जे मते नुआ वैल्यू मते शो करछि बट से पुराना वैल्यू भी ता भीतर लोडेड हेकी अछि बुझला pass them as a parameter to PLSQL subprogram. Subprogram can take parameters. You can pass variable as parameters to subprogram. Use them to hold the output of PLSQL subprogram. Variable can be used to hold the value that is returned by a function. Right? Function through variable भितर मु value टाको return कर पारी. Function माने जेमते तम धर किछि aggregate function यूज करूछो या फिर जो रिजल्ट आसीबो जो धर सम तो सैलरी रो सम बाहर करिवो तो गोटी सिंगल वैल्यूटा आसीबो सिंगल वैल्यू तम वेरिएबल भीतर स्टोर करी रख परिवो बुझला वेरिएबल थ्रू रु तम शो आउटपुट देखै परिवो जेंते एठी आइडेंटिफाई कांस्टेंट डाटा टाइप नॉट नल देन डिफॉल्ट देला एठी देखो डिक्लेयर कला से वी हायर डेट माने एठी अंडरस्कोर देला अंडरस्कोर तम यूज कर परिवो राइट वेरिएबल डिक्लेरेशन अंडरस्कोर यूज कर परिवो v underscore high date सेठी मोर डेट मोर डाटा टाइप आसला v underscore डिपार्टमेंट नंबर सेठी मोर डाटा टाइप देला नंबर्स एंड नॉट नल तमरो इक्वल टू 10 देला माने तमरो 10 तमरो सेठी एक्सेप्ट हे परिबो नाही गोटे मिनिट हां मनस हां हां भलो अछि हां सुनो v लोकेशन varcat 2 Atlanta हला ए वैल्यूटा मोर स्टोर हबो v लोकेशन भीतर देन c com कांस्टेंट नंबर 1400 तो एटा तमरो स्टोर हबो जो वैल्यू वेरिएबल टा डिक्लेयर कर ता भीतर वैल्यूटा स्टोर declaring and initializing PLSQL variables you must declare all PLSQL identifiers in the declaration section before referencing
them in the PLSQL block, you have the option of assigning an initial value to a variable as shown in the slide. You do not need to assign a value to a variable in order to declare it, right? If you refer other variable in a declaration, be sure that they are already declared separately in a previous statement. जदि तमे variable declare करछो जो order रे declare करछो एटा mandatory नो जे सेही order रे value टा pass करी जेम तमे table creation करछो जे table creation करछो column जेता create करछो जो sequence तमे column create करछो सेही sequence तमे value insert करिया पड़छ but variable सेमति नै तमे variable टाको तम requirement अनुसार तमे ताको यूज कर परिबो जोटी जोटा value pass करिया कथा सेठी pass कर परिबो बुझला The syntax is identifier is the name of the variable. Constant the variable so that its value cannot change. Constant must be initialized, right? Data type is a scalar, composite, reference, or LOB, large object. Data type. This course covers only scalar, composite, and LOB data types, right? Not null, constrain the variable so that it contain a value. Not null, variable must be initialized. Expression is any PLSQL expression that can be literal expression, another variable, or an expression involving operator and functions. Note, in addition a variable, you can also declare course and exception in the declarative section. You learn about declaring course in the lesson title using explicit course and about expression exception in the lesson title handling exception, right? तो तमे से variable जेता declare करछो एसबु जिंस तमे यूज कर परिबो, right? Data type यूज कर परिबो variable जेता declare करछो data type तो must दबो कारण variable भितर को data तमे पास करियो ता पई तमो data type मेंशन करिवार अछि, right? को प्रकार data तमे पास करिवो तो सेटा तमे variable रे in order sequence रे तमे ताको access कर परिबो बुझला जेमते एडी देला declaring and initializing PLSQL variable declare कला गोटे variable declare कला जोटा कि होची ताटा होची v_myname ता data type देला varchar2 right then begin SQL statement देला begin dbms output dot put line जोटा कि काली हमें पढिथिले output show करिया पाई right my name is variable with जो डाटा टा हमर अछि सेटा तम शो करिवो v name equal to john right dbms output dot put line my name is vname end बुझला begin now end भितर SQL statement तमे दबो आ से जदि तमे आउटपुट शो करे पय चाहछो ताले dbms underscore output dot put line हमको दबार अछि बुझला then एटा गोटे प्रकार रहला आ गोटे प्रकार कोन एठी तमे कोन करछो जेता दउछो ता पर तमे वैल्यू टा पास करछो राइट तापर तमु से शो करबो जे माय नेम इज जॉन बोली शो करबो बुझला आ गोटे टाइप कोन जेता वेरिएबल डिक्लेयर करछो सेता तमे वैल्यू पास कर दो जेता वेरिएबल डिक्लेयर करछो सेता वैल्यू पास कर दबो एंड बिगिन रे तमरो v_my name स्टीवन तमरो अछि dbms output dot put line my name is तमरो जोटा लास्ट रे जोटा तमे शो पास करछो सेटा तमु शो करे बुझला कारण एटा होची ओल्ड डाटा एटा होची न्यू डाटा कारण SQL स्टेटमेंट रे तमे ताकू पास करछो तो तमो न्यू डाटा शो करिवो बुझला declaring and initializing PLSQL variable continued examine the two code block in the slide in the first block the v_my name variable is declared but not initialized a value john is assigned to the variable in the executable section string literal must be enclosed in a single quotation mark if your string has a quotation mark as an today's date the string would be today's date right जदि तमे string normal string पास करछो डबल कोटेशन भितरे बट जेता PLSQL रे तमे वैल्यू पास करबो सेटा सदाळे सिंगल कोटेशन भितरे तमे पास करबो बुझला जेन तमे SQL रे वैल्यू पास करतलो varchar कॉलम भितर वैल्यू पास करतलो तो सेम
The put underscore line procedure is invoked by passing the v variable. The value of the variable is connected with the string. My name is, right? My name is put a string. It is single quotation ଭିତରେ ମୋର pass ହେଇଛି. The output of this anonymous block is ଏଇଠି ତମକୁ ଦେଖାଇଲା. Anonymous block completed କାଲି ଯେମିତି ଦେଖେଇଥିଲେ ହେଲା, କାଲି ଯେମିତି ଆମେ execute କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବ completed, ତାପରେ ତମକୁ output show କରିବ ଯଦି ତମେ put dbms underscore output dot put underscore line जदि यूज कर, राइट? तो तुमको देखला my name is, then my name is John, बुझला? The second block, the v name variable is declared and initialized in the declarative section, जोटा कि तमरो एटा declarative section, एटा तमरो ऑलरेडी declarative section रे तमरो वैल्यू तमे पास कर देछो. Then सी कोन कहला v underscore my name holds the value John after initializing. The value is manipulated in executable section of the block. The output of this anonymous block is Steven. जोटा कि मु तुमको कहली एटा डिक्लेरेशन सेक्शन में तमे वैल्यू पास कलो, बाय स्टेटमेंट यूज कलो सेथरे नुवा वैल्यू तमे पास कर दला वेरिएबल भितरे, तम आउटपुट कोन शो करिवो सेही स्टीवन. माय नेम इज स्टीवन, बुझला? Delimiter in string literal declare गोटे variable declare कला v event, begin v event equal to q father's name, right? एटा मोरो गोटे string टा पास कला से dbms dot dbms underscore output dot put underscore line third Sunday is June is v event, right? Then v event Mother's Day, dbms underscore output dot put line the second Sunday is my May is this, right? तो मते प्रथमे एटा कोन शो करिवो एई फर्स्ट स्ट्रिंग रे मते शो करिवो फादर्स डे, राइट? थर्ड संडे इन जून इज फादर्स डे शो करिवो. सेकंड स्टेटमेंट मते कोन देखेबो सेकंड संडे इन मे इज मदर्स डे, बुझला? कारण एटा जेतरा मु डिक्लेयर कला परे बिगिन स्टेटमेंट भीतर मु वैल्यूटा पास कली फादर्स डे, ताकू मु आउटपुट टा शो कर देली एठी, राइट? देन आउ गोटे वैल्यू पास कली मदर्स डे से वेरिएबल भीतर, ताकू जेतले शो करबी तो मते कोन देखेबो सेकंड वाला पार्ट मदर्स डे, बुझला? तो एठी मोर तार आउटपुट देखो anonymous block completed, third Sunday in June is Father's Day, second Sunday in May is Mother's Day, बुझला? Delimiter in string literal, if your string contains an apostrophe identical to a single quotation mark, you must double the quotation mark as in the following example v underscore event varchar 15 जेमते तापरे मोर एटी colon देला colon दबो हला colon equal to तापरे मोर string टा मु पास एटा आइदर तमे सिंगल कोटेशन भीतर पूरा स्टेटमेंट लिखि पारो या फिर तमे एमती सिंगल करके लिखि पारी स्पेस पे, बुझला? The first quotation mark acts as a escape character. This marks your string complicated, especially if you have SQL statement as string. You can specify any character that is not present in the string as a delimiter. The slide shows how to use the Q notation to specify the delimiter. The example use exclamatory symbol and square bracket. The delimiter consider the following example, that is Q Father's Day, right? एटा होची मोर delimiter symbol टा, Q टा मोर कोनोसी string नो कि character नो, सेटा गोटे delimiter symbol टा, बुझला? You can compare this with the first example in this page. You start the string with Q. If you want to use delimiter, the character following the notation is delimiter used. Enter your string after specifying the delimiter, close the delimiter and close the notation with a single quotation mark. The following example shows the how to use, right? जेमते एठी मोर दला v event value variable भीतर value पास कोचे q single quotation भीतर square bracket भीतर मदर्स डे. तो वेरिएबल तम भीतर वैल्यू जो पास करो वेराइटी टाइप्स रो तमरो देछि ऑप्शन देछि, तमे जोटा चाहिले से अनुसार तमु जोटा यूजर फ्रेंडली लागो सेटा तमे यूज करियो.
बुझला examine variable data types and the percentile type attribute types of variable PLSQL variable scalar reference large object right जोटा कि तमरो LOB जोटा मु तुम कहली then composite non PLSQL variable bind variable right दीटा मोर अछि गोटे होछि PLSQL ले मोर एगुडा सब आसीबो and non PLSQL ले bind variable मोर आसी right कोन जानिबा types of variable every PLSQL variable has a data type which specify a storage format, constant, and a valid range of values. PLSQL supports several data types categories, include scalar, reference, large object, and composite. Scalar data type hold a single value, right? जोटा कि हमर एटा ए जो केस रे हमर सिंगल गोटे टाइम रे गोटे वैल्यू मोर पास होछि एट गोटे टाइम रे गोटे वैल्यू मोर पास होछि राइट एटा होछि स्केलर वेरिएबल गोटे टाइम रे हमें गोटे वैल्यू पास कर परिबा वेरिएबल भीतर फॉर एग्जांपल v underscore vname variable in the example in the section declaring and initializing PLSQL variable in this lesson is of type varchar2 therefore v underscore my name can hold the string value PLSQL also support boolean variable boolean माने कोन boolean गोटे टाइप रो डाटा टाइप जोटा को जे bull राइट bull रे आइदर ट्रू और फॉल्स मोर से रखे ता छडा और किछ रखिबो ट्रू और फॉल्स reference data type holds value called pointer which point to a storage location pointer कोन pointer होची गोटे थर्ड पार्टी जे की एक्चुअल वेरिएबल जोटी स्टोर हेची ताकू पॉइंटिंग करी राइट जेमेति धर तम पाखु किछि बाय पोस्ट किछि लेटर आसु बुझला पोस्टमैन आनी दोछि पोस्टमैन कोन तम जे धर केटे नुवा पोस्टमैन जदी आसिला पुराना पोस्टमैन तो जानि थिबो जे हां कोठी कोठी कोन अछि नुवा पोस्टमैन जदी आसिला तो सी ता पई मोर रेफरेंस ता कोन तार एड्रेस तम लेटर ऊपर जो एड्रेस ता अछि तार एड्रेस से एड्रेस ता होछि पॉइंटर सी पॉइंटिंग करबो एक्चुअल तम घरटा कोठी अछि राइट देन पोस्टमैन जाकि तम घर पाखे पहुंची तुमको लेटर टा देई परछि वैल्यू तो रिट्रीव कर परछि पॉइंटर डिटो सेम काम करे बुझला LOB data type hold values called locator which specify the location of large objects such as a graphic image that are stored outside the table composite data type are variable by using PLSQL collection and record variable PLSQL collection and record contain internal state elements that you can treat as individual variable right composite से तमरो individual variable भीतर तम value टा pass कर then non PLSQL variable includes host language variable declare in pre-compiled program screen field in forms application and host variable you learn about host variable later in this lesson right non PLSQL हमें पछरे हमें जानिबा non PLSQL ले कोन होय non PLSQL ले तमरो host language डाटा तमरो पास हुए वेरिएबल भीतर होस्टिंग माने होस्ट माने धर पाथ हो नेटवर्क हो एगुडा सब तमरो वैल्यू टा पास हो तो सेटा हमें जानिबा पर सेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखो तमरो स्नो व्हाइट long ago is a land for far away there lived a princess called Snow White right तो एटा मोर गोटे टाइप रो गोटे मोर वेरिएबल टाइप रो अटलांटा वेरिएबल भीतर मो ए सब वैल्यू टा को स्टोर कर पारि अटलांटा हो जे मोर वैल्यू बुझला टाइप्स ऑफ वेरिएबल the slide illustration the following data types true represent a boolean type एटा हो जे मोर boolean type ठीक अछि कारण मु तुमको कहली boolean type रिटर्न करे कोन ट्रू और फॉल्स 15 Jan 2009 represent a date এটা হচ্ছে মোর date right date variable রহে the image represent below binary large object right image এইটা মোর below data type রে রহে
then the text in the call out can represent varchar2 data type or a CLO, right, character large object. Then তোমার নাম্বারটা represent number data type with precision and scale. The film reel represent the B file, right, ଏଇଟାକୁ ତମର B file data type ରେ ତମେ ରଖିପାରିବ, binary file. The city name Atlanta represent the varchar2 data type, ଏଇଟା ମୋର varchar2 declare କରିପାରିବ, ବୁଝିଲା? Guideline for declaring and initializing PLSQL variable: follow consistent naming convention, use meaningful identifier for variable, initialize variable that are designated as not null and constant, initialize variable with the assignment operator, that is colon equal to जोटा initialization होची माने value टा मो स्टोर करची variable भीतर, or the default keyword, right? either तमे एटा तमे यूज कर परिबो, either तमे default keyword यूज कर परिबो value टा variable भीतर स्टोर करिया, दीटा वे अछि. variable declare कला ता भीतर जदी value पास करे अछि ताले एई सिंबल टा यूज करिवो value पास करिवा, राइट? या फिर आ जगह रे तमे default statement टा यूज कर परिबो. Declare one identifier per line for better readability and code maintenance. Guideline for declaring and initializing PLSQL variable. Here are some guidelines to follow when you declare PLSQL variable. Variable and follow consistent naming convention. For example, you might use name to represent a variable and C_name to represent a constant, right? नेम जदि खाली मु डिक्लेयर करिवि सेटा रिप्रेजेंट करियो वेरिएबल टाइप. जदि मु C_name जदि माने रिप्रेजेंट करिवि ताले सेटा हे गेला कांस्टेंट, राइट? सिमिलरली टू नेम ए वेरिएबल यू कैन यूज v fast name, right? The key is to apply your naming convention consistently for easier identification, right? मते इजी आइडेंटिफिकेशन करिया पे ए सब जिंस मते दरकार, बुझला? Use meaningful and appropriate identifier for variable. For example, consider using salary and salary underscore with underscore commission instead of salary1 and salary2. If you use not null constant, you must assign a value when you declare the variable. In constant declaration, the constant keyword must precede the type of specified. The following declaration name a constant of number type and assign the value of 50,000 to the constant. A constant must be initialized in its declaration, otherwise you get compilation error. After initializing constant, you cannot change its value. जेमते एठी salary constant number equal to 50,000. तो कांस्टेंट कीवर्ड टा जदी यूज करछि ए 50,000 टा कांस्टेंट हे गला, ताकू तमे आउ चेंज कर परिबा, बुझला? जोरे के तमरो फिक्स रहे. Avoid using column name as identifier. Declare employee ID number, right? Begin select employee ID into employee ID from employee where last name equal to Kochar, right? Use the not null constant when the variable must hold a value, right? जेतले तमे वेरिएबल तमे डिक्लेयर करछो सेठी तमे नॉट नल मेंशन करिवो जदी तमरो वैल्यू तमे इनिशियलाइजेशन करूछो. गाइडलाइंस फॉर डिक्लेयरिंग PLSQL variable. Initializing the variable to an expression with the assignment operator, this or with the default reserved word. If you do not assign an initial value, the new variable contains null by default until you assign a value, right? variable declare करछो ता भीतर जदी किसी वैल्यू न पास करछो by default से null accept करतो, बुझला? To assign or resign a value to a variable, you write a PLSQL statement, assignment statement. However, it is good programming practice to initialize all variables. Two objects can have the same name only if they are defined in different blocks where they coexist
you can qualify them with labels and use them. Avoid using columns name and as identifier. If PLSQL variable occurs in SQL statement and have the same name or as a column, the Oracle server assume that it is a column that is being referenced. Although the code example in the slide works, code that is written using the same name for a database table and a variable, it is not easy to read or maintain. Impose the not null constraint when the variable must contain a value. You cannot assign nulls to a variable that is defined as not null. The not null constraint must be followed by the initializing clause जोटा कि तमरा एटा एमते तमे पास करिवो तमरा पिन कोड देलो varchar देलो then not null equal to तमरा oxford हला बुझला naming convention of PLSQL structure used in this course जेमते तमरा एठी variable देला तमे right for example vrate right जेमते constant तमे देला right सब program दबो एउडा सब आमे प्रोग्राम जेता आमे माने आसीबो जे कोड आसीबो सेता सब एउडा सब यूज करबा बुझला आज एती थाउ काली एटू स्टार्ट करबा हला स्केलर डाटा टाइप टू स्टार्ट करबा अरे यार खाली एथ्रु पडिया स्लाइड किछ नै यार आर स्लाइड कोन गलो आर स्लाइड होची एटा माने एई जो देइछ एटा जो अछि एटा होची तार स्लाइड हला सी तापर तार डिस्क्राइब करछि कोन बोल हला हमको आपन के पने रिपीट होय ना 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 एई तार ताको आमे कॉपीराइट कर पे ओराकल रु अछि ना ओराकल कम ये रु अछि देखन पूरा बहुत अच्छा ताको कमेंट करियो नहीं ताको देखिबा हम ता नै फास्ट तीनटा चट्ट तमरो एई जो जानिबा पई कीवर्ड वगैरह एगुडा सब जानिबा पई अब जो कोड हबो तुमको माने तुम सेटा स्किप करि परिबो तार सेम कोड तुम यूज करछो खाली तुम प्रैक्टिस करिया बुझला फास्ट तीनटा चट्ट तुमको लागिबो फास्ट तीनटा चट्ट ते लॉन्ग चैप्टर गुडा कारण से कीवर्ड केमिति हम यूज करबा कोठी दबा कोन करबा सेगुडा सब अछि डिस्क्राइब कराइ कौन कौन अच्छी तुम से टेबल क्रिएशन तापर तुम वैल्यू इनसर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन एगुडा सब अच्छी कोडिंग तो सेगुडा तुम जल्दी जल्दी सर जो सॉफ्टवेयर न कि हां सेटा सर माने लोड कला को आसु आपकर माने रजिस्ट्री की रा भी कटि जाउ आ तको अनइंस्टॉल कला को कंट्रोल पैनल मिलु सेटा डिलीट मारिया पड़छ देखिबो तुम नेट रे तमरो ओराकल फेचेड की जदी मिली जीवो भलो कथा की मागुन से डायलॉग बॉक्स रे आसी रजिस्ट्री की रा भी कटि जाउ छ आ ताले सी तांगर सिक्योर करी रखछन दे ओराकल ना हो नि जा सेटा हम केता आसिले एठु नै जीवो पेन ड्राइव रे ये पठेबन सर सेटा बहुत माने बहुत ये माने मो नेट सर जीवो अटैच गले मोर नेट मोर नीट रो नेट अछि सेट पठे देबो अरे मोर नेट से जो मोर ऑनलाइन क्लास होगा चलछे ना सेठरे आपो मंच तमे आरो हप्ता जतरे आसीबो ना से रोड तो आसीबो ना तमे जतरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हे जीवो कोड फोर्स जतरे स्टार्ट हे जो तापर सेतल तो तुमको आसे पड़िबो एठी दिन दिन तो सेतल नै जीवो हला ओके ओके थैंक यू